if you have a situation where summation of forces is equal to 0. ये आवाज आ रही है ठीक से? So if summation of forces is 0, then this implies that acceleration must be equal to 0, right? And what did we do for this? We said that we will draw a free body diagram, and then you choose an axis, and then you find components of all forces not lying along, not along the axis, right? And then what else do you do? Equate forces on positive x-axis with forces on negative x-axis, and then simply repeat for y-axis. Now this may seem to you like a long drawn out process, but in reality it is nothing. In reality, I'm just saying that draw the FBD and add up all the force vectors to 0, right? So we had discussed in vector mathematics different ways of vector addition. So if you have three forces like this perhaps, and you want to add these three forces, so of course you can apply the polygon law of addition and you can apply the triangle law of addition, but the fastest method is to write the vector in I cap j cap form and simply add up the vectors, because that would be uh, addition which would be very similar to normal mathematics, right? But here I'm sort of skipping all the steps. Okay, I don't want to apply parallelogram law. I don't want to apply polygon law. I don't want to talk about I cap, j cap. So what I do is I construct an xy axis, which is another way of saying that we are talking about I cap and j cap. And then from geometry and other means, which I'll discuss today, we'll find the angle theta. And once we have found the angle theta, then we can talk about the components of this force. And then all you do is you, भैया वॉइस लो है तो मैं क्या करूं, एक मिनट रुको, माइक ये रहा, हाँ हाँ उल्टा पकड़ा हुआ। ओके, सो अभी अभी आवाज क्लियर आनी चाहिए. नाउ द वॉइस शुड बी क्लियर. सो you equate now you have found the components. So basically finding the components का मतलब है I cap j cap में आपने वेक्टर को लिख दिया, और
और एक बार आपने आई कैप जे कैप में वेक्टर को लिख दिया एंड यू नो दैट द सम इज जीरो. So supposing that we have a vector a which is something like ax I cap plus ay j cap, and we have a vector b which is equal to bx I cap plus by j cap, and I'm telling you that a plus b is equal to 0, the vector a plus b is going to be ax plus bx I cap plus ay plus by j cap. And if I'm telling you that this is equal to 0, this simply implies that ax plus bx must be equal to 0. इसका मतलब कि x component of a plus x component of b must add up to 0, right? So that is what we are doing. We equate this to this, and we equate this to this, and that gives us a set of equations, two sets of equations which we solve. And if we have multiple bodies, of course, then we keep on getting two sets of equations for every object, and then we solve these equations to find whatever the unknown value is. Okay? So this is how we deal with equilibrium problems, right? This is how we deal with problems where there is no acceleration. How to deal with problems where there are acceleration, where there is acceleration, is what we are hopefully going to discuss later today. Okay, so I promised you last time that the questions that are given in lecture 1 and 2, there are some shortcuts there. If you are finding it difficult to find angles, ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा. शॉर्टकट नहीं है actually, it is just a pattern that you observe. You do 10 questions and you observe a pattern and then you say अच्छा ठीक है ऐसे होता है. So let me change the whiteboard. Okay. So the first question that I want to discuss, I think it is something like this. मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो मैं 50 kg लेके चल रहा हूँ. And horizontal floor, and it is given that this angle is 60 degrees and this angle is 60 degrees. We have to find the normal reaction. Okay, so we have to find the normal reaction due to the two surfaces, and this is the situation which is given. I'm sorry about the diagram, but the sphere is actually touching the two surfaces, right? So, so what should we do? How to find the normal reaction of the two surfaces? Well, the first thing I realized in looking at the question, what is the first thing you realize? First thing you realize is that this is an equilibrium problem. Equilibrium problem का मतलब ये हुआ that this is a problem where the object we know definitely is unaccelerated, not accelerated. That means the net force on the object is 0. Right? I hope everybody is understanding this. ये बहुत ज़रूरी है समझना that the net force on the object is 0. Right? This is something that is given in the problem.
So now I'm going to draw the FBD for the 50 gram wala object, and the FBD would be something like this. Yeah, I've drawn the sphere without any object, without anything in the surrounding. And then for the forces, I just write due to Earth, there must be 50 G. Due to this surface, there must be N1. And due to the right wala surface, there must be a force of. Okay, now I want to choose an axis. Let me choose a horizontal vertical axis. Now you can ask, why are you choosing a horizontal vertical axis? So these are things that you pick up when you start doing questions. Very simple things, simple geometrical things. Now I know, yes, we can, yes. Now I know that the problem is symmetric. Symmetric का मतलब एक जगह 60 डिग्री है, दूसरी जगह 30 डिग्री, दूसरी जगह भी 60 डिग्री. Since the problem is symmetric, therefore I know that the two blue arrows N1 and N2 that I have drawn are symmetric to each other. Right. This means that whatever this angle will be, same angle will be here. Okay. अगर ये angle और ये angle different होते, right, then there would be a problem, and the problem would be that these two angles would not be the same. Okay, so since I know that these two angles are same, therefore I just want to find the value of these two angles. Right? I want to find the value of these two angles. Okay, now please follow me very carefully. So this is the sphere, okay, and this is the inclined plane on which it is resting, with which it is in contact with, and therefore this arrow must be the N2 arrow. Remember that normal reaction is perpendicular to the interacting surfaces. So this is 90 degrees. ये सबको समझ में आना चाहिए. The normal reaction acting on the sphere due to the inclined plane is perpendicular to the inclined plane. Okay? हाँ. So अगर ये N2 है और मेरे को मालूम है कि ये वाला एंगल 60 degrees, this is given, right? Now the axis, हाँ बिल्कुल tangent property use किया मैंने. Now the axis is like this, remember, right? Axis is like this. Now I hope you can see all sorts of angles. I hope you can see all sorts of angles here. Make this axis nicely. Please tell me what is this yellow wala angle. Please tell me what is this yellow wala angle. Remember that this red line is vertical and the green line is horizontal. So this is 90 degrees. Yeah. So this angle, this yellow angle must be equal to 30 degrees. Right? Okay. If this yellow angle is 30 degrees, then what can you tell me about this blue angle? If the yellow angle is 30 degrees, then what can you tell me about the blue angle? Right? So the blue angle is the angle between the red line and the black line, and we know that the two red lines are perpendicular to each other. Therefore, the angle between them is 90 degrees, and the angle between the red line and the black line is 30 degrees. Therefore, this blue angle must be 60 degrees. Okay, and now can anybody tell me this green angle? Can you tell me this green angle? Can you tell me this green angle? Yeah.
So this green angle should be equal to 30 degrees. And the reason why this green angle is 30 degrees is that we know that the angle between the normal reaction and the inclined plane is 90 degrees. Right? We know that the angle between the normal and the inclined plane is 90 degrees. So if the angle between the incline and the red line is 60 degrees, then the angle between the red line and the normal reaction must be 30 degrees, right? Simple geometry. Now, please tell me the value of this red angle. Please tell me the value of this red angle. Please tell me the value of this red angle. So this red angle will be 60 degrees. Right? This red angle will be 60 degrees. Okay. Okay. अब आप देखो, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन है, this is the normal reaction due to the if this is the normal reaction due to the inclined plane, then if this angle is theta, and if I were to draw a horizontal line and a vertical line, okay, if I were to draw a horizontal line and a vertical line, then this angle would definitely be 90 degrees. And what can you tell me about this angle, the blue angle? This angle will be this angle will be 90 minus theta. Okay, 90 minus theta, and therefore this red angle will be theta. Right? I hope everybody is following this. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं फॉलो कर रहा है. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो you need to tell me now. Okay, this is simple basic geometry. In a right angle triangle, one angle is 90, the other angle is theta, then the third angle has to be 90 minus theta. If the angle between two lines is 90 degrees, right, and if the angle between two lines is 90 degrees and we have one line somewhere in the middle, then our x-axis is parallel to the ground. Then if one angle is theta, the other angle is 90 minus theta. Okay. So if this angle is theta, what can you tell me about this angle? ये कौन सा ज्योमेट्रिकल रूल है जो मैंने मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? कौन सा ज्योमेट्रिकल रूल है जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? Vertically opposite angles, right? I think you learned this in class 8 or 9. Vertically opposite angles. So this angle must also be equal to theta. So the thing that you need to remember is that the angle between normal reaction and the vertical is
always equal to the angle of the inclined plane. Angle between normal reaction and vertical is always equal to the angle of the inclined plane. Please notice that this is angle theta and this is angle. हाँ हाँ, वो तो वहाँ पे mg और जो n1 n2 वाला है वो इक्वल है, वो तो सिमेट्री से assume कर रहे हैं, लेकिन दिस इज, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल inclined planes and we are going to see a lot of inclined planes, right? We are going to see a lot of inclined planes. We are going to see an unbelievable number of inclined planes. And once कुछ भी हो जाए, asymmetric, symmetric, कुछ भी हो जाए, मैंने आपको प्रूव किया है using geometry, right? I have another proof for you. If this angle is 90 minus theta, then this angle must be theta. Therefore, this angle must be 90 minus theta, and therefore again this angle must be theta. Right? This is symmetry हो, asymmetry हो, कुछ भी हो, अगर आपके सामने एक inclined plane आ गया और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है या कोई ऑब्जेक्ट उस इंक्लाइन प्लेन से टच कर रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन होएगा उसका एंगल वर्टिकल के साथ एग्जैक्टली वही होएगा जो इंक्लाइन प्लेन का इटसेल्फ एंगल. ओके, दिस इज अ रूल. Like I said, it's not really a rule, it's an observation. It is a simple geometrical conclusion that we can draw and we can generalize. Okay, so the angle between the normal reaction by an inclined plane onto an object and the vertical will always be equal to the angle of the inclined plane, right? Therefore, I go back to this question. Please notice here also, एक चीज मैं derive करना चाह रहा था, ये 60 degrees ये angle है, ये angle भी 60 degrees है, right? So the angle between the vertical and the normal reaction. This is the normal reaction. This is the normal reaction. This is the vertical. Angle between the normal reaction and the vertical must be the same as the angle in the inclined. अबे एक्सिस डिफरेंट लेगा तब तो डिफरेंट. मैं वर्टिकल वर्टिकल बोल रहा हूँ ना, तब से मैं जो है वर्टिकल वर्टिकल मतलब vertical. So let's talk about now the angle between N2 and the vertical. Let me just rub these out. So from the knowledge that we have just gained, what is the angle between N2 and the vertical? ये एंगल कितना होना चाहिए? अब ये N2 किसने लगाया? 50 kg वाले ब्लॉक के ऊपर. ये N2 तो ये इंक्लाइंड प्लेन ने लगाया और ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी 60 डिग्रीज होना चाहिए. नाउ लेट्स फाइंड, हाँ बिल्कुल सही. नाउ लेट्स फाइंड द angle between this normal reaction and the vertical. So this normal reaction N1 has been provided by this inclined plane, right? And this inclined plane makes an angle of 60 degrees. So this angle must also be 60 degrees, right? Now remembering that हम अगर components की बात करेंगे, right? If we talk about components, तो जो जो एक्सिस एंगल के साथ चिपका रहता है वो 60 डिग्री वाला कंपोनेंट जाता है. ओके, 60 बोलो, कॉज वाला कंपोनेंट जाता है. तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट होएगा N1 का, that will be equal to N1 cosine 60 degrees and this component will be equal to N1 sine 60 degrees.
Similarly, for this N2, this component will be N2 cos 60 degrees. This component will be equal to N2 sin 60 degrees. Okay, right? ये आ रहा है भाई सबको समझ में, कोई ऐसा ना हो जो इसमें पीछे छूट जा रहा हो. This is the bread and butter of all the topics that we are going to do in physics. Okay, you must understand this part of physics जो मैं अभी बता रहा हूँ. What have I done? I have drawn the free body diagram. I have drawn a horizontal vertical axis. I could have drawn any other axis as well, but I have drawn horizontal vertical axis. And I have used the fact that the normal reaction due to an inclined plane makes the same angle with the vertical as the inclined plane itself, as the angle of the inclined plane itself. Okay, and then I have used the fact that if the angle between the force vector or any vector and a particular axis is theta, then the component along that axis must be the magnitude of the vector multiplied by cosine of theta, and the other axis and the component of that vector along the other axis must be equal to the magnitude of the vector multiplied by sine theta, right? Okay, so since we have equilibrium, right? Let me just ये arrows की value में लिख दूँ कहीं पे. ये arrows की value is n1 cosine 60 degrees and n2 cosine 60 degrees. Since we have equilibrium, then we must have along the x-axis ये वाला force should be equal to ये वाला force. So n1 sine 60 degrees is equal to n2 sine 60 degrees, and this tells me that n1 is equal to n. And along the y-axis we have n1 cosine 60 degrees plus n2 cosine 60 degrees. This is the total force acting along the positive x-axis. Must be equal to 50 G. Now, since N1 is equal to N2, right, we can say that let this be equal to N, let's say. And if this is the case, then we get 2N cosine 60 degrees is equal to 50 G, right? And if 2N cosine 60 degrees is equal to 50 G, we know that cosine 60 degrees is equal to half, right? We know that uh, cosine 60 degrees is equal to half. Therefore, n is equal to 50 G, right? And we leave the answer as 50 G. So the normal reaction by the two surfaces on that 50 kilogram block is 50 G. And if somebody asks you, ये 50 G क्या चीज है? ये newtons. The force has the units of newtons, and G has a value of 10. So the force applied by the normal reaction applied by the surfaces on the sphere is equal to 500 newtons. If the value of G is 9.8, if the value of G is 10, sorry, if the value of G is 9.8, then obviously it will be 50 into 9.8. Okay, so I want to हाँ
So here I want to make something very clear. Okay? मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख रहा हूँ, मेरे को बताओ मैं किसका नाम लिख रहा हूँ। किसका नाम लिखा मैंने? Yeah. So if I write something like this, which is sort of पूरा लिखना पड़ेगा ना नाम डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? प्रसन्ना नाम स्पेलिंग सही लिखा है मैंने। प्रसन्ना नाम का स्पेलिंग सही लिखा है, गलत लिखा है? Do you think that this is correct? क्यों प्रसन्ना? तरुण, ये सही है कि जो पहले लिखा था वो सही है? If that is the case, then when I write normal reaction is equal to 50 G, okay, I'm really not writing 50 kg. Please, I don't write, unless I forget, I don't write half-baked things. मैं प्रसन्ना का नाम कभी अन्ना नहीं लिखूंगा, मैं पूरा नाम लिखूंगा। ये चीज और ये चीज बिल्कुल डिफरेंट। This is equal to 50 multiplied by G. 50 into G. 50 product with G. 50 multiplied by G. क्या समझ में प्रसन्ना? हाँ बोलो। सर आप एक बार लास्ट स्लाइड जाओगे क्या? हाँ रुक जाओ ना पहले 2 मिनट। नहीं सर, मुझे डाउट है एक्चुअली। ये वाला? नहीं सर, उसके एक पहले। हाँ सर, इसमें सर आपने 30 डिग्री क्यों नहीं लिया? मतलब जब आप लिख रहे थे इक्वेशंस तो आपने 30 डिग्री क्यों नहीं कंसिडर किया इसमें? कहाँ 30 डिग्री? यहाँ पे ये जो आपने 60 लिया ना, हाँ सर आपने तो 30 क्यों नहीं लिया? 30 डिग्री ले लो, 30 ले लो, कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ता। ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता। That's your choice. I am just using this statement that this angle and this angle will be same. ओके You want to take this angle? Obviously you can. It's just like अगर मैंने एक एंगल 60 बोल दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 30 है ना। ओके क्लियर हो गया ना अभी? अब बताओ भाई, प्रसन्ना एंड तरुण, समझ में आया जो मैंने यहाँ लिखा है? ये होएगा 50। अरे जिसको कंफ्यूजन था मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई, जो नहीं कंफ्यूज है वो ना कंफ्यूज हो इसमें। Who is not? तरुण और प्रसन्ना इसमें कंफ्यूज थे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सर मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राम में दिया है तो हमें उसे केजी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है क्या? अब देखो क्या होएगा कि जनरली मतलब ये क्वेश्चन में तो मास मैंने दे दिया,
but generally M1, M2, M3 रहेगा, right? I mean, we are not really going to use mass. Uh, we are not going to use the values of mass. Having said this, even if the value of mass is given, then what I would strongly recommend and suggest is that while solving the problem, we use M1, M2, M3, and when we have the final answer with us, then we put in the values of M1, M2, M3. Now, if you are using the value of G as 10 or 9.8 meter per second square, it simply means that you are using the SI units. SI units के बारे में मालूम है ना? हाँ. तरुण, SI units के बारे में मालूम है ना? तो SI units मतलब होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि even if I give you the mass in grams or any other unit apart from kilograms, you are supposed to convert it to kilograms and then write the value. You are supposed to always convert it into kilograms and then write the value. Unless, of course, the answer itself is an integer answer and they are asking, "Bhai, please tell me the value of the force in terms of something something dot 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 dash 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 whatever." और आखिरी में उन्होंने लिखा है ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then you would have to, of course, use. Then you would have to use uh, that unit. बट अगर कोई यूनिट गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट तो आपको यूज करना ही है kilograms. Okay? Question ठीक है. number 2. So now you are going to try this. This is your turn now. हाँ बिल्कुल लास्ट में कन्वर्ट करना है. लास्ट में ये वाली प्रॉब्लम भी जो आप करोगे ना, आई वांट यू टू डू दिस प्रॉब्लम. I want you to do this problem using m and then finally put in the value of m. Again, I am sorry for my diagram, वो touch नहीं कर रहा है मेरे diagram के हिसाब से, लेकिन in reality it is touching. So this is surface 1, this is surface 2. Find n1 and n2. And if it is not clear from the diagram, I am telling you that the object is in equilibrium.
N1 या N2 विश्वजीत? एक 50G आ रहा है क्या? हाँ ये सही लग रहा है प्रतीक्षा। लो +1 नीचे है ना, या फ्रैक्शन के बाद है कि डिनोमिनेटर में ही है +1? ओके, नहीं तेरा तो समझ में आ रहा है। अब मैं करके दिखा रहा हूँ। बॉडी विदाउट एनी सराउंडिंग फोर्सेस mg n1 n2 अब ये n1 was the normal reaction by this inclined plane, therefore I will take this angle as 60 degrees, and n2 was the normal reaction due to this inclined plane, therefore I will take this as 30 degrees. Let's find the components. This component will be n2 cosine 30. This component will be n2 cosine 30. And this component will be n2 sine 30. Again, this component will be n1 cosine 60. This component will be n1 sine 60. So along the x-axis, the equations that we are going to get will be n2 into 1 by 2 is equal to n1 into root 3 by 2. 2 will cancel out. So we get, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। n2 is equal to root 3. And then along the y-axis, we have n1 cosine 60 degrees plus n2 cosine 30 degrees is equal to mg. n2 की वैल्यू तो √3n1 है, तो ये हो जाएगा n1 into 1 by 2 plus n2 is √3n1. √13 ना दिखाई दे रहा है, √3n1 into cos 30 is √3 by 2 is equal to mg, right? So I can write this as, ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो √3 into 3 to 3 हो जाएगा, n1 by 2 plus 3n1 by 2. That should be equal to 2n1 is equal to mg. n1 is equal to mg by 2. And if n1 is equal to mg by
2, N1 is equal to mg by 2, then N2 must be equal to root 3 mg. Right? And now you can put in the values of. ठीक है? हाँ हाँ, आई एम गिविंग यू मेनी मोर. सो आई थिंक प्रतीक्षा तुमने जो मैं अगला देने वाला हूँ क्वेश्चन उसी का आंसर दे दिया. थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा है भाई? थर्ड लास्ट स्टेप लिख के बताना. कौन सा है थर्ड लास्ट स्टेप? पार्थ. N1 cos 60 plus N2 cos 30 is equal to mg. हाँ हाँ, 10 पे आ रहे हैं बाबू, अभी आते हैं. N1 cos, ये देखना, ये उस डायग्राम में देखना जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें जो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के वो क्या है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस. N1 cos 60, N2 cos 30. आया समझ में पार्थ? ये ऊपर वाली फोर्सेस है और ये नीचे वाली फोर्सेस, दोनों को इक्वेट कर दिया. Equate the forces along positive y-axis with the forces along negative y-axis. आया पार्थ समझ में? तो स्फीयर टच कर गया भाई दोनों सब. वाह. So this is surface 1. हाँ अभी दिखाता हूँ उनका. वो क्वेश्चन में दिया होगा जी को 10 लेना है या 9.8 लेना है. Find all normal reactions. This is in your exercise या एग्जाम्पल में है. हाँ मैंने तो मास दिया ही नहीं है, तो कहाँ से निकाल दिया आंसर भाई?
100 जी 100 जी नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट थोड़ा अनलाइकली लग रहा है क्योंकि आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके ऊपर डबल फोर्स लग रही है आपके जी से, थोड़ा सा आ रहा है क्या? 100 जी आ रहा है तो बात अलग है। हाँ विश्वजीत कर लो, उसके बाद से अभी मैं सॉल्व करूँ ना तो आंसर कंपेयर कर लेना। क्या हुआ शौनक, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चीटिंग चीटिंग थोड़ी ना होती है। ये क्वेश्चन 3 है, वो क्वेश्चन 4 है। अब आंसर मैं अभी नहीं चेक कर रहा हूँ शौनक। फर्स्ट यू डू दिस क्वेश्चन आल्सो एंड देन आई विल सब आपके ये सब पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम देयर। हाँ डेटा चेंज है तो डेटा चेंज करके आंसर कर लो ना। हार्दिक मुझे नहीं मालूम है आंसर, मैं भी सॉल्व करूंगा तो आंसर निकलेगा। अच्छा पीडीएफ में नहीं होंगे मेरे पास, मैं कहीं पे रखता हूँ। चलो मैं कर रहा हूँ, आई डू द क्वेश्चन, यू कैन कंपेयर योर आंसर्स, डू द सेकंड वन। इसमें सरफेस वन ऊपर वाला ले लो और ऊपर नीचे वाला ले लो। I'm going to change the slide and I'm going to give you one more question. Okay, I'm going to change the slide, one more question.
क्या हुआ आर्यन? चलो, now I will solve the 3 remaining questions. हाँ, देखो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. Please stop your इतना एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए भाई पास. कौन से क्या बताया चार्वी तुमने? चलो देखो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. प्लीज सी, प्लीज look carefully, right? This is what you have to sort of learn to do. Okay, so I will always follow the 3 steps. Step number 1, draw the FBD, object without any surrounding, force on it due to the earth, force on it due to surface 1, force on it due to surface 2. Right? 2 ऑब्जेक्ट हैं सराउंडिंग में, 3 ऑब्जेक्ट हैं सराउंडिंग में, अर्थ, सरफेस 1, सरफेस 2. तो हमारे एफबीडी पे 3 फोर्सेस बननी चाहिए. mg की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होती है और सरफेसेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस होती है. Then choosing a coordinate axis, finding the angles, which I have already showed you the shortcut for. N2 is the normal reaction. N2 is the normal reaction produced by the inclined plane. Therefore, the angle with the vertical of the normal reaction must be the same as the inclined angle. Components ले लेता हूँ मैं. ये component हो जाएगा N2 cosine 30. ये component हो जाएगा N1 sin 30. And then all I have to do is simply equate. So along x-axis, force along the x-axis is equal to force along the negative x-axis. So this means that N
2 is equal to 2n1, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, y एक्सिस के अलावा n2 cos 30 degrees is equal to mg. So I get mg is equal, sorry, n2 is equal to 2mg by root 3. Therefore, n1 is equal to mg by root 3. I hope the answer that you got. अगर आप चाहते हो फुल एंड फाइनल आंसर लिख दूं मैं, तो यहाँ पे आएगा 2 into m, which is 100 into 10, 1000 by root 3 newtons. N1 is equal to 500 upon root 3 newtons. Right? Please notice the steps: free body diagram, axis, components, equating the x force to negative x force, equating the positive y force to negative y force. मार्क्स तो दिया ही है ना, इसमें लिखा तो है ये, और मैं क्या और कैसे मार्क्स चाहिए? Does not matter. n के टर्म्स में अगर आपका आंसर आया है, that is sufficient for me. This one, free body diagram. So the normal reaction due to surface 2 is simple. Normal reaction due to surface 1 थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो ऊपर से नीचे आएगा नॉर्मल रिएक्शन. एक्सेस, अगर कहीं पे एंगल 45 डिग्रीज आ जाएगा, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. अगर एंगल 45 डिग्रीज आ गया, इसका मतलब ये होएगा सारे एंगल 45 डिग्री हो, सारे एंगल 45 डिग्री हो, ये भी 45 होएगा, ऊपर वाला भी 45 होएगा. वेरी गुड. एंड द angle made by the vertical and the normal reaction is the same as the angle of the incline, so this must be 60 degrees. Now I'll take components. ये हो जाएगा n2 sin 45, ये हो जाएगा n2 cos 45, ये हो जाएगा n1 sin 60 degrees, ये हो जाएगा n1 cosine 60 degrees. Right? X-axis के along forces n1 sin 60 degrees is equal to n2 cos 45 degrees. So n1 root 3 by 2 is equal to n2 by root. Y-axis के along n2 sin 45 is equal to mg plus n1 cos 60 degrees. अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. सॉल्व करने के लिए I notice that this will cancel out and I'll get a root 2 here. n2 is equal to root 3 by root 2 n1. So I get root 3 by root 2
N1 into 1 by root 2 is equal to mg plus n1 by 2. So this will be equal to root 3 by 2 minus 1 by 2. N1 is equal to mg. N1 is equal to 2mg upon root 3 minus 1. Right? अब N1 आ गया, N2 भी आ जाएगा. Right? हाँ भाई प्रसन्ना. Please understand this statement. Angle between normal reaction and vertical is equal to the angle of inclined plane. प्रसन्ना ये प्रूफ आपको समझ में आया था? प्रसन्ना ये प्रूफ आपको समझ में आया था? क्या लिखा है मैंने इसमें? पहली लाइन क्या लिखी है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्टिकल is the same as angle of the inclined plane. Angle reaction between normal reaction and vertical is the same as the angle of the inclined plane. वो डाउन हो या अप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके लिए मेरे को 2 एफबीडी बनाने पड़ेंगे. 2 क्यों बनाने पड़ेंगे? 3 क्यों नहीं? 2 क्यों बनाने पड़ेंगे? 3 एफबीडी क्यों नहीं बनाने पड़ेंगे? Why will I have to make 2 FBDs and not 3? I don't need to make 3 FBDs. I only need to make 2 FBDs. I only need to make FBD of this guy and this guy. I only need to make FBD of up wala guy, niche wala guy. Why not the third one? Symmetry. Good part. Very good. It's because of symmetry. The FBD of the lower 2 objects will be mirror images of each other. So I don't need to draw 3 FBDs. पहला, दूसरा. पहले वाले में मेरे को लगेगा mg नीचे लगेगा, एक n ऐसे लगेगा और एक n ऐसे लगेगा. ये दोनों n सेम मैं कैसे ले सकता हूँ? अगेन बिकॉज ऑफ सिमेट्री. नीचे mg लगेगा और इसको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और एक n डैश ऐसे लगेगा, f ऐसे लगेगा और एक n डबल डैश ऐसे लगेगा. तो ये अगर स्फीयर 1 है तो ये 1 है, ये अगर स्फीयर 2 है, सिलेंडर 2 है. n double dash is the normal reaction due to the floor on the sphere, on the cylinder, and n dash is the normal reaction on the left lower cylinder due to the right lower cylinder.
So now I want to choose the axis. ये रहा यहाँ पे axis. एंगल कैसे निकालें? अब यहाँ पे एंगल निकालना एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा होगा इनका जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, और जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है वो ऐसे लगा हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा है। तो हॉरिजॉन्टल से ये नॉर्मल रिएक्शन 60 डिग्रीज बना रहा होगा। This means that this angle will be 60 degrees. This angle will be 60 degrees. So the component here will be n sine 60 degrees. And the component here will be n cosine 60 degrees. Similarly, for this guy, horizontal से 60 degrees angle है, तो जो component हमारा नीचे आएगा that will be n sin 60 degrees, और जो component हमारा left में जाएगा that will be n cosine 60 degrees. So therefore I'm going to get for this guy along the y-axis. I'm not interested really in the I'm not really interested in the x-axis, because x-axis पे n cos 60 equal to n cos 60 आ रहा है, जो कि मैं पहले ही वर्कआउट कर चुका हूँ actually. The moment I wrote n and n, the moment I wrote both the normal reactions as n, this means that uh, I have already considered the fact that horizontally the forces are going to be equal, and therefore I don't need to worry about the x-axis. So y-axis के along यहाँ पे आएगा n sin 60 is equal to mg. 2n sin 60 is equal to mg, क्योंकि ये वाले n का भी यहाँ पे n cos 60 है और यहाँ पे n sin 60 है. So this gives me n root 3 is equal to mg. So n is equal to mg over root 3. फिर आता है x axis के along. नीचे वाले में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द y axis. नीचे वाले में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द y axis बिकॉज जो y axis है उसमें एक एडिशनल फोर्स आया हुआ है एंड डबल डैश, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर, राइट? एंड आई डोंट वांट टू राइट नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर. Nobody has asked me what is the normal reaction due to the floor, so I'm not really interested in that. यहाँ पे आएगा n cos 60 plus n dash is equal to f. Right, but we have been asked for minimum f. So for minimum f, n dash should be equal to 0. This implies that n cos 60 is equal to mg. n की वैल्यू है mg by root 3. cos 60 की वैल्यू है 1 by 2. सॉरी, mg मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, यहाँ पे आएगा f. So f minimum is equal to mg over 2 root 3. हाँ भैया, पूछो क्या पूछना है.
हाँ भाई, क्या क्या पूछा है मुझे? आपने तो रिकॉर्डिंग देखना यार, मैंने वही स्टेप्स फॉलो किया ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है मैंने। स्टेप्स क्या क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम. In this case, I have drawn two free body diagrams. Because there are three objects, I should ideally draw three FBDs. But जो लोअर वाले दो सिलेंडर्स हैं वो सिमेट्रिकल है, इसलिए आई ओनली ड्रॉ टू FBDs. उसके बाद से मैंने एक्सेस चूज कर लिया, और एक्सेस चूज करने के बाद मैंने कंपोनेंट्स निकाले. कंपोनेंट्स निकालने के बाद मैंने ऊपर वाले सिलेंडर पे वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस पे फोर्सेस को इक्वेट किया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स एक्सिस पे मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि फोर्सेस इक्वल होंगे. और जो नीचे वाला सिलेंडर है उसके लिए एक्स एक्सिस पे फोर्स को इक्वेट किया, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक एडिशनल फोर्स एन डबल डैश है, which is the normal reaction due to the floor, which I don't really want to find. It has not been asked. Therefore, I don't want to involve that. Therefore, I have not written the y-axis wala equation for the lower cylinder. Now, they want us to find minimum force F for which equilibrium is maintained. इसका मतलब क्या होगा? मैंने बार बार बोला है कि इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल सा डिफरेंस रहेगा. Minimum force F required to maintain equilibrium. Supposing the minimum force F required to maintain the equilibrium is 100 Newton. Supposing, तो मैंने 100 न्यूटन दोनों तरफ से लगा दिया और ये सिलेंडर्स इक्विलिब्रियम में है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं. अब अगर मैं 120 न्यूटन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं 120 न्यूटन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा? क्या आप तीन पेन को अपने टेबल पे इस तरीके से रख के बॉटम दो पेन पे हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के सामने फोर्स लगाएंगे तो क्या आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो पेन मूव करने लगेंगे? Will they start to move? If you try it, you will find that nothing like that happens. So if the minimum force required is 100 newtons, even if you apply 120 newtons, the objects will not move. Still there will be equilibrium. If you apply 150 newtons, still there will be equilibrium. If you apply 200 newtons, still there will be equilibrium, and so on. So what is changing when I'm applying this additional force? Look at this equation. Look at this equation. ये इक्वेशन में जब मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? एन डैश भी इंक्रीज हो जाएगा. मतलब कि जो फोर्स बिटवीन दीज टू गाइज है, बिटवीन द लोअर सिलेंडर्स, वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट? देयरफॉर इफ आई डिक्रीज द फोर्स एफ, ये एन डैश डिक्रीज होने लगेगा. सो व्हाट इज द मिनिमम value of n dash? That will give me the minimum value of f. Minimum value of n dash is 0. That is when these two cylinders at the bottom, they just don't touch each other. तो अगर आप अपने पेन पे ऐसा फोर्स लगाओगे, नीचे वाले पेन का फोर्स लगाओगे, तो you will find that for a particular value of force, जो साइड वाले नीचे वाले जो दो पेन हैं वो आउटवर्ड मूव कर जाएंगे और ऊपर वाला पेन नीचे मूव कर जाएगा. तो अगर मैं ये मिनिमम 100 न्यूटन से भी कम फोर्स लगाऊंगा तो ये साइड, ये तीनों सिलेंडर बेसिकली मूव कर जाएंगे, राइट? Therefore, this is the additional condition for which I cannot teach you anything, for which I cannot sort of tell you the rules. नहीं, रूल्स में ये भी आता है because ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, राइट? 90% of the questions will be solved by those three rules which I have laid down. What are these three rules? Draw the FBD, draw the axis,
find the components and equate the components along x and y axis, right? ये general rule, ये हर problem में applicable. ऐसी problem आ सकती है, remaining 10% of the problems will be where an additional condition will be required, right? So this additional condition in this problem is that you have to find this minimum force F, है ना? और भी problem आएंगे जहाँ पे और additional conditions आएंगी. That unfortunately can only be handled by practice and more practice. So before I leave, one more thing I want to show you, and one more thing I want to show you here for question number 2. Instead of choosing the horizontal vertical axis, let me just redraw the diagram. ये N2 है, ये N1 है, और ये Mg. So instead of just taking the horizontal and vertical axis like I have done here, I realize that the angle between N1 and N2 is 90 degrees. Okay. Since the angle between N1 and N2 is 90 degrees, therefore I can actually take an axis like this as well. And maybe this will be easier. In fact, this will be easier. So now I need to find either this angle or I need to find this angle. Either of these two angles I need to find. How will I do this? How will I find these angles? Well, actually it's very easy because ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है. मेरे को मालूम है कि वर्टिकल के साथ ये वही एंगल बना रहे हैं जो इसके साथ बना रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए. तो बेसिकली मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा हूँ. मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा हूँ. रिमेंबर वी डिड अ क्वेश्चन लाइक दिस इन वेक्टर्स. सो इफ आई टेक ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस and if I know that this angle is 60 degrees. So if I rotate this by 60 degrees anti-clockwise, मेरा ये green axis पे yellow axis coincide कर जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये angle should be equal to 60 degrees. And therefore this component of mg must be equal to mg cosine 60 degrees. This component of mg must be mg sine 60 degrees. Right? And therefore, if I am saying that this is the x-axis and this is the y-axis, then along the x-axis, I will get what? N2 is equal to mg sine 60 degrees. That is equal to N2 is equal to root 3 mg by 2. And along the y-axis, very good, Aryan. And along the y-axis, I will get N1 is equal to mg sine, cos 60 degrees. So if I have here cos 60 degrees, N1 is equal to mg by 2. Right? And if you look at the answers, they are exactly the same. Right? तो एक्सिस भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. Sure. So in the next class then, in the next class we'll discuss कि अगर मोशन होएगा तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है. अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होएगा तो कैसे हैंडल करना है.
हाँ, बोल भाई हार्दिक। तो जो आपने होमवर्क दिया था सो लाइक उसमें जो एफबीडीज बनाने थे उसमें लाइक दो तीन हाँ, टाइप के सवाल ऐसे थे लाइक इंक्लाइंड प्लेन पे कोई स्क्वायर ब्लॉक है कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट और कोई कोई सर्कुलर फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर नहीं ट्रायंगल फर्क स्फीयर से पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, वी आर नॉट यस डीलिंग तो सेम ही होगा विद सारे केसेस के लिए। सबs के लिए सेम होएगा, बस हमारे विजुअलाइजेशन के लिए उसको अलग अलग बना दें। ठीक थैंक ओके चलो फिर, बाय बाय, परसों मिलते हैं। प्लीज ट्राई टू डू लेक्चर 2। डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि उसमें स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, स्ट्रिंग दिए तो टेंशन आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।